हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हमारे कॉलेज से जा रहा है एजुकेशनल टूर और हम जा रहे हैं अभी कर्नाटका की ओर। और हमारा पहला डेस्टिनेशन है अल्वास आयुर्वेदा कॉलेज। करते हैं अपनी जर्नी को शुरू और सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि रेगुलर क्लासेस से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जर्नी भी इंजॉय करेंगे और साथ ही न्यू थिंग्स लर्न करने को भी मिलेंगे। टूर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और अभी हम सब लोग बस के अंदर आ चुके हैं और अपनी अपनी जगह देख रहे हैं किसको कहाँ पर बैठना है। और ये है कुछ इस तरह का बस के अंदर का नज़ारा और सब लोग काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। और अभी जो है हमारी बस हो चुकी है स्टार्ट और हम कॉलेज से निकल चुके हैं और अभी हम पहुँचेंगे कल सुबह के टाइम बेंगलुरु में। और बस के अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी लग्जरी है और इसमें फुल कंप्लीट एक डीजे सिस्टम लगा हुआ है। अब देखना ये है कि ये हमारी एजुकेशनल टूर की जर्नी हमें कितनी क्रेजी मेमोरीज देता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं बेंगलुरु और बेंगलुरु में हमारा एक होटल में स्टे था जहां पे हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है। और अभी इसके बाद हम जाएंगे अपनी आईवी के लिए। तो यहाँ पे हमारी बस हो चुकी है चेंज और ये बस हमने कोची में चेंज की थी क्योंकि जो पुरानी वाली बस थी उसमें कुछ खराबी आ गई थी और उसकी वजह से हमको ये दूसरी बस मिली है। और ये पूरा सफ़र अब 6 दिन की जो ट्रिप है हमारी वो इसी बस में होएगी। तो हमारी जो आज की आईवी है वो है हमारी अल्वास आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड अल्वास BNYS कॉलेज में। तो पहले हम जाएंगे अल्वास BNYS कॉलेज और उसके बाद जाएंगे हम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अल्वास BNYS कॉलेज में। BNYS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। और ये BNYS भी एक पूरा प्रॉपर मेडिकल सिस्टम होता है, जैसे BA MS है MBBS है, तो उसी तरह से ये भी 5.5 ईयर्स का होता है। और कुछ इस तरह का है अल्वास BNYS का कैंपस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और बहुत बड़ा कैंपस है। और हम भी निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने। ഫസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു 1 hour 1.5 hour ആവും. धात्री Yeah, it's named for picnic. तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे कॉटेज हैं ये होते हैं पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं ये कॉटेज। और इसमें जो है पेशेंट को 7 दिन 10 दिन 15 दिन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन पेशेंट को एडमिट किया जाता है और पूरा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ഒബിസിറ്റിക്കും എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനും ഇത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കാറുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 7 to 14 ഡേയ്സ് ഇത് എടുക്കാറുണ്ട്. ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ 15 മിനിറ്റ്സ്. ഇത് യൂഷ്വലി 20 മിനിറ്റ്സ് വരെ പോകും. ബാക്കി എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും 15 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ഹോട്ട് കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ. പിന്നെന്താ ഇതിൽ ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രഷറിലും വേവ്സിലും ആയിരിക്കും വാട്ടർ വരിക. അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ മാനുവലി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ വാട്ടർ വരും. പിന്നെ ലൈറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ये है हिप बाथ जो कि नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और ये है स्पाइनल स्प्रे। इसके फ़ायदे होते हैं नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना और उसको स्टिमुलेट करना, स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग को कम करना। और ये है आर्म एंड फुट बाथ। और
इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस एंड मेंटल टेंशन थोड़ी रिलैक्स हो सकती है। हैंड एंड स्टिफनेस की मसल में टाइटनेस जो होती है उससे भी रिलीफ मिलता है। और ये है स्पाइन बाथ। स्पाइन बाथ का काम होता है बैक मसल को रिलैक्स करना और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना एंड ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। Equal for each person, and from these holes the water will be coming particular force. So they will be saying that's what this water will call it. Only we are using this thing. This is linen cloth. So we will be using this linen cloth first for wrapping. Above this we will be using this woolen cloth. Cotton. Yeah. Because for maintaining the temperature, only we are using this thing means easily the vaporization will be happening, no? So no effect will be there. So for maintaining the temperature, we will be covering with woolen cloth. Okay. So this is for abdomen. According to each person, if like more of this means the little bigger cloth will be providing, and this is for this one thighs and okay, and this is for knee, little more small. It will be for knee. And this is for thyroid, like neck pack, for giving neck pack and will be used. So these are the different types. Okay. Steam stones. അല്ല ഇത് വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ആ അറ്റത്തെ ഒരു ചേമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ നമ്മള് ഫുള്ള് എന്താ കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റേ കുക്കർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് സ്റ്റീമിലാണ് താഴെ. ഇത് വന്നിട്ട് ഫുൾ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് it's actually covered with full wooden thing. Inside that iron rod is there, iron and silica rod, so it won't like resist heat outside. So for that, so they will be sitting here. Almost 9 can sit at a time. If they have any discomfort, one like that. So steam will be coming from there. Steam seeing that hot air. Hot air is gone. Hot air. Hot air is gone. Steam and light is also there. Full face, whole body. The 45 minutes procedure. Mud bath is prepared by making therapeutical mud. It is prepared by excavating mud from 8 feet. Okay, 6 feet in the book 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 feet നമ്മൾ താഴേന്ന് മഡ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിന് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ലീവ്സ് വേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളം. പിന്നെ വീണ്ടും അത് പിന്നെ പൊടിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ പൊടിച്ചൊക്കെ ഇടും, കട്ടയൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതിനെ ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി പിന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ. തുറന്നിട്ട് there is a stool inside, they'll sit in that, their head only will be there. Okay, there is a steam അങ്ങനെ വരും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് കുക്കർ ഓൾസോ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോസ് ആയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പോസ് ഉണ്ട്, അതിലെ കൂടി പിന്നെ ബോഡിയിലേക്ക് അടിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കും, 2 ഗ്ലാസ് വാട്ടർ കൊടുക്കും, പിന്നെ തലയിലേക്ക് കോൾഡ് കംപ്രസ് കൊണ്ട് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും കൊടുക്കില്ല, 5 to 10 minutes നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ബാത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരും. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിനാണ് മഡ് വെക്കുക. ഇതിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ മഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് 100 മഡ. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ മഡ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് അവരിതുപോലെ അടച്ചു വെക്കും, നല്ല റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ
ഇത് കണ്ണിന് വെക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് മഡ് നിറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ വാട്ടറിൽ മുക്കുക, ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇത് ഐക്ക് വെക്കും, ഇത് അബ്ഡമൻ, സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. सो ये है पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए कोटेज। तो ये है हमारे, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कोटेज दिखाए थे, ये है उसका इंटीरियर कोटेज का। और यहाँ पर पेशेंट को एडमिट करके एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो और यहाँ पर हमारा BNYS कॉलेज का टूर होता है समाप्त। और इसके बाद अभी हम जाएंगे अपने आयुर्वेदा कॉलेज की साइड, मीन्स अलवास आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की तरफ। और वहाँ पर हमारा एक IV है, तो वहाँ पे जा कर के हम देखेंगे क्या होता है। तो BNYS एंड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज के बीच में है कुछ डिस्टेंस। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बस से आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की ओर। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अलवास आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में। और ये एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है कर्नाटका में, ना कि कर्नाटका में बल्कि जो साउथ इंडिया में जितने भी आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं उनकी जो एक लिस्ट है, उनमें टॉप लिस्ट में ये कॉलेज भी आता है। तो यहाँ पर 2023 में जब मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने अलवास में भी अप्लाई किया था, बट यहाँ पर उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन हो चुके थे ऑफ, जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो ऑफ हो चुके थे। उसी वजह से मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं मिला था। बट केरला में उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, तो मैंने अप्लाई किया था केरला में, और मेरे को एडमिशन केरला में फिर मिल चुका था। We'll walk and then we'll go visit the animal house. Is that fine? Sure. Thank you. Yeah, faculty. You close your arm. In fact, the animal is very comfortable with you. So close your arm, ma'am. Close your arm. Okay. So now it feels that it is there, and aram se it will go and sleep. Close your arm. Just close your arm. So the animal feels that that's a burrow. Okay, and aram se it will go. So that means to say it is able to sense Adira madam's body odor. Okay, now by any point of time when if you are trying to do certain experimentation, for the first 2 or 3 days, we allow the researcher to interact with the animal. Okay, and that is how the animal knows that you are the researcher, and every day you are trying to encounter with it. For the first time, if you are trying to come and work upon the animal, then the animal has only the defense mechanism. It will either bite you or scratch you. Okay, so you see now after some point of time, it will become normal. So it is still on the surveillance. Okay, so this is how there should be a bond which has to be created between an animal and the researcher. It cannot happen as if you do it in your laboratory. You take a test tube, you put a reagent, and then after 90 days, okay, the researcher felt very bad to sacrifice that animal. Why is this? Because there is a bond which is being established between the animal and the researcher. So many a times we just want to be very very practical when we are trying to handle animals. So even as a clinician, you want to show sympathy and empathy to your patient, but you cannot borrow the disease. When you borrow the disease and go home, even though you are well. सो फाइनली आज की जो हमारी IV थी वो कंप्लीट हो चुकी है अलवास कॉलेजेस में। और अब हम निकल रहे हैं कूर्ग के लिए, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में जो हम पहुंच जाएंगे कूर्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।